अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, welcome to my YouTube channel Education and Entertainment World. Friends, in last video we have discussed realism, and I have told you that we will cover this topic in two lectures. And the last lecture we have discussed uh, the introduction and origin of realism, and in today lecture we will discuss the characteristics of realism. So now, without wasting your time, come to the topic. What is the characteristics of realism? In today's lecture, we will discuss the characteristics of realism. In the first outline in today's lecture is detail and realism. So what it means, realist के जो राइटर्स थे उन्होंने जो प्राइमरी लिटरेरी यानी जो मतलब उन पे फोकस किया था वो थी नावल। क्यों उन्होंने जो है ना नावल को फोकस किया था? क्योंकि नावल एक ऐसी जानवर थी जो उनको बैक स्पेस प्रोवाइड करती थी, ताकि वो जो है ना ज़्यादा मतलब डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर सके किसी इवेंट के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में। तो उन राइटर ने पोएम को मतलब क्यों नहीं चुना? क्योंकि पोएम उनको जो है ना उतनी स्पेस नहीं देती थी ताकि वो एक इवेंट के बारे में डिटेल में लिख सके। अच्छा, अब डिटेल में लिखना जो है ना रियलिज़म में क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर आप एक इवेंट के बारे में या एक सिचुएशन के बारे में जितना ज़्यादा डिटेल पेश करते हैं, उतना ही जो है ना ये प्रिसाइज़ होती है, वो रियलिटी उतनी ही मतलब प्रिसाइज़ होती है, या जो वो इवेंट होता है वो उतना ही जो है ना रियल बन जाता है। अगर आप जो है ना सिर्फ ये कह दें कि अगर आपके पास कोई मतलब आपका दोस्त या जानने वाला आ जाए कि फॉर एग्जांपल इब्राहिम या रोमान वगैरह ने क्रिकेट में लड़ाई कर ली, तो आप जो है ना मतलब उसमें डाउटफुल हो जाएंगे कि क्या वाकई ये सच बोल रहा है। उसके बजाय अगर आपके पास एक दूसरा बंदा आ जाता है और आपको जो है ना कि सारी जो कहानी होती है जो क्रिकेट में रुनमा होती है कि रोमान और उसमें जो क्रिकेट में दोनों ने सबसे पहले रोमान ने चक्कर लगाया इब्राहिम को, फिर इब्राहिम ने जो है ना रोमान को गाली दी। इस तरह जो है ना वो आपको जो है ना सारा किस्सा जो है ना डिटेल में बता दे, तो आप जो है ना फिर मतलब आपके माइंड में आ जाएगा कि ये जो है ना सही है, मतलब ये जो है ना लड़ाई हुई है, तो फिर आपको लगेगा कि ये जो है ना मतलब सच बोल रहा है, तो आपके लिए जो है ना वो रियलिटी बन जाती है। अब आते हैं नोट्स की तरफ। डिटेल इन रियलिज्म, रियलिस्ट राइटर्स यूज गिव मोर डिटेल्स ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट सीम्स रियल। दे इमर्स द रीडर्स इन सो मच डिटेल दैट दे बिलीव व्हाट दे आर रीडिंग इज रियल। मतलब वो जो है ना एक छोटी चीज़ के लिए भी जो है ना उतनी डिटेल देते थे कि जो रीडर होता था उनको ये लगता था कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ ये सारी जो है ना रियल है। This technique was started by two French writers, Henri de Balzac and Gustave Flaubert. Open up cousin, Betty, or Madame Bovary. In these two works, you will find details of small things like food, clothes, landscape, etc. अब जो है ना मैंने पहले बताया कि ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी जो है ना आप लोगों को वो देते थे, डिटेल प्रोवाइड करते थे। जैसे कि फूड होता था, क्लॉथ्स, लैंडस्केप्स, जो पहाड़ वगैरह होती है, छोटी जो बुलंदी होती है, तो उनके बारे में भी जो है ना ये, या कि कपड़ों के बारे में भी, कैरेक्टर के कपड़ों के बारे में या फूड के बारे में भी ये आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड करते थे, जो जिससे आपको लगता था कि जो है ना ये जो भी सीन डिस्क्राइब हो रहा है ये बिल्कुल जो है ना रियल है। दे बिकम मॉडल ऑफ रियलिस्ट टेक्निक्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नाउ इनटू द नेक्स्ट आउटलाइन विच इज़ ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज एंड रियलिज्म। अब ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज से क्या मतलब है कि रियलिज्म वालों ने जो है ना ऑर्डिनरी मतलब जो डेली लाइफ में जो लोग लैंग्वेज बोलते थे, मतलब जो उनकी मादरी ज़ुबान या यूँ कह दें कि ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज थी लोगों की, उन पे जो है ना उन्होंने फ़ोकस किया। मतलब वो जो नावल लिखते थे तो उसमें जो है ना वही ज़ुबान यूज़ करते थे जो डेली लाइफ में लोग यूज़ करते थे। अच्छा, उससे पहले जो मोमेंट्स थी जिसमें जो है ना राइटर लिखते थे, तो उनकी ज़ुबान जो थी वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए नहीं थी। वो जो एरिस्टोक्रेट थे उनके लिए जो है ना ये लिखते थे। तो उनकी ज़ुबान जो उनकी जो मतलब वर्क थे उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। जैसे कि रोमांटिसिज्म वाले जो राइटर्स थे उनकी अगर आप पोएट्री देखते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अ, उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू रियलिज़्म, क्योंकि वो जो है ना ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखते थे। Before realism, the language of writers was elevated and not for common people. This language was not realistic. The realist writers tried something new. They used simple language.
Language language used by ordinary people in daily speech. They use transparent language whether their subject matter is complex. मतलब उनका जो सब्जेक्ट मैटर था कितना भी मुश्किल ना होता, लेकिन वो जो है ना फोकस करते थे ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज पे, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल दे स्पीक एंड सोसाइटी. They wrote about ordinary people. Anton Chekhov was a realist writer and was famous for short stories. He used simple language in his works. We can find in his story The Lady with the Rock. Mark Twain also used simple and ordinary language that we can use in his work Adventures of Huckleberry Finn. In this work, he uses simple language that is grammatically incorrect. Now move to the next outline, that is omniscient narrator. Omniscient narrator is the one who knows everything at once. अब जो रियलिस्ट जो राइटर्स होते थे, मतलब जो नावल को नरेट करते थे स्टोरी को, तो उनको जो है ना सारे सीन का पता होता था कि अब जो है ना इस सीन में क्या होगा, मतलब उनको हर चीज़ का पता चलता था कि कैरेक्टर के बारे में पता होता था या सीन के बारे में पता होता था, तो उसको हम एमनिशन नेटर कहते हैं, मतलब उसको सारी चीज़ों का पता चलता था. They are the superhero of narrator. They knows everything. Thus they jump from one character mind to another, from one scene to another. जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि उनको पहले से पता होता था, इसलिए जो है ना ये एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जंप करते थे, एक सीन से दूसरे सीन में जो है ना ये जंप करते थे. From one place to another, etc. Knowing everything means that the narrator has details about everything, which is convenient about which is convenient thing that gives sense of reality in the novel. ठीक है ना. उनको जो है ना स्टोरी का पता होता था, कैरेक्टर का पता होता था कि इनका इस कैरेक्टर का यहाँ पे जो है ना क्या रोल होने वाला है, इस सीन में यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है. तो वो जो है ना बिल्कुल वन फ्लो में जो है ना वो बता सकता था, जिससे जो है ना रीडर को लगता था कि जो है ना मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या जो यहाँ पे जो भी हो रहा है इस सीन में, दैट इज़ रियल. You can see in Leo Tolstoy novel, who is famous for his use of the omniscient narrator. We can see this in his work Anna Karenina. Quote from Anna Karenina: "All happy families resemble one another. Every unhappy family is unhappy in its own way." Now the next characteristics is verisimilitude, verisimilitude and realism. अब ये क्या होता है verisimilitude? Verisimilitude means the appearance of being true or real. इसका मतलब ये है कि आप जो है ना जो सीन पढ़ रहे हैं किसी नॉवल में, वो आपको ऐसा लगेगा या आपको इस तरह अपीयर होगा कि ये जो है ना बिल्कुल ट्रू है, उसमें कोई जो है ना लाई नहीं है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है. The works of realist authors is true and real. The realist authors want us to believe that what we are reading is actually happening somewhere in the world. Realism was heavily influenced by journalistic techniques because journalism was also taking off that time. अच्छा, मतलब जिस तरह जो है ना जर्नलिज्म वाले रोज़ जो है ना न्यूज़ देते हैं किसी इवेंट के बारे में, जो आपको जो है ना लगता है कि जो है ना ये बिल्कुल सच हुआ है ये वाक़या। मतलब जर्नलिज्म में जो है ना आप किसी अखबार को पढ़ते हैं तो आपको जो है ना उस तरह लगता है कि ये जो है ना जो बता रहा है अखबार में ये बिल्कुल सच है। आपको जो है ना उसी तरह रियलिज़म में जो राइटर लिखते थे, उनसे भी जो जब आप उनके वर्क्स को रीड करते थे तो वो जो है ना आपको लगता था कि ये जो है ना बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा, उस वक़्त जो है ना क्या हो रहा था, जर्नलिज़्म की जो मतलब डिपार्टमेंट थी वो जो है ना अराइज़ हो रही थी। तो इसलिए जो है ना ये इन्फ्लुएंस है उसका रियलिज़्म पर। Realist writers write like journalists, and what they are writing gives sense of verisimilitude. We can find this technique in the works of Leo Tolstoy, who wrote War and Peace about warfare and battlefields.
The next point is the novel in realism. The realist writers wrote in novel because it contained more details. When the writers provide more details, then the readers believe that it's real. Novel contain more details of things that appear real. The realist writers wrote in other genres, but novel is at the heart of realist tradition. There are many reasons of writing novel. I it's big and it's flexible. We can give more details that we can't. अच्छा, अब जो रियलिस्ट राइटर्स थे उनका जो प्राइमरी राइटिंग सोर्स था वो नावल था। उन्होंने नावल को क्यों चुना? क्योंकि नावल जो है ना उनको एक ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता था, जिसमें जो है ना वो ज़्यादा डिटेल में लिख सकते थे। जबकि इस कंपेयर टू अदर जॉनरास वो जो है ना रियलिस्ट राइटर्स को ज़्यादा स्पेस नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब आप एक चीज़ को ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो वो जो है ना ऐसा लगेगा जैसे ये रियल है। Gave in sonnet. The novel gave more to talk about loads of different issues and different characters. In Leo Tolstoy, the novel War and Peace, there are over 500 different characters. In this lecture, we have discussed 5 characteristics. Inshallah, in the next lecture, we will wind up uh, this lecture. We have 5 more characteristics of realism that we will cover in the next lecture. Thank you.